बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आपको एक वीडियो में वाई टी स्टूडियो डैशबोर्ड की एनालिसिस करना दिखाया है, जो है वाई टी, और उसके बाद टॉप 3 बेस्ट तो ये आपको डेवलप कर देगा। इसके अंदर शीट के एक्टिवेट, और ये आपको वो तो बता देगा कि आपके टॉप 3 बेस्ट डेज कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वो इसने बता देना है कि किस तरह से आप और भी काम आप देखना चाहें, कि आपको पता है आपका 2023 असल में वाई टी ये आपको 500 लाइंस का डेटा ही डाउनलोड करके देता है, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अपने इस डेटा में जाते हैं। थी हमारी, वो थी 31 ऑफ 23, ठीक है। तो उसके बाद एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा था का डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि 500 एंट्रियां पूरी हो गई है, 500, ठीक है। तो 31 ऑफ जुलाई तक उसने दे दिया था, और उसकी बेस पर उसने रिपोर्ट बना के अला की चली। हम गए यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और उससे पहले करें, ये देखें वाई टी स्टूडियो, जहाँ पे इसे हमने इसे डाउनलोड किया है। ये जो है 31 जुलाई से लेकर और भी किया, ठीक है। ये भी तो वैसे ही डाउनलोड हुआ, जैसे हम कस्टम में जाते हैं ना, उसके अंदर देखें तो आपके पास डेटा है, और इसको आप वापस कर दिया था 500 की लिमिट की वजह से। सेकंड स्टेप ये किया तो उसने बना दिया, तो दे दी, जबकि हमारा चैनल शुरू भी नहीं माना। इन्फॉर्मेशन जो आ गई हमारे पास एक्सेल, ये अनटाइटल्ड शीट है, कॉपी करके अपनी इस वाली इंफॉर्मेशन जिसमें हम मिस कर दी, ठीक है, और पेस्ट करके जैसे ही हम इसमें गए, तो इसके ले लेने की निशानी क्या है, आप देख रहे हैं, ये फार्मूले इसने लिखे हैं, ये हमने नहीं लिखे, ये उसने, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ये सवाल होता है कि ये क्यों नहीं आ रही इन्फॉर्मेशन एस्टिमेटेड रेवेन्यू। उसकी वजह आपको यहाँ से पता चलेगा, आपका चैनल मोनिटाइज होने का ये वो दिन था 21 मार्च, तब है मोनिटाइज हुआ है, और जो है वो यहाँ पर 8 सेंट्स आ गए। तो अब तक जो है नहीं मिलती, जब तक कि ये $100 हो नहीं जाता। एक माइलस्टोन तो अचीव हो, जो है मेहनत करनी होगी, भी जाके होगा, नहीं तो यूट्यूब जो है कोई अपने साथ फेवर करनी पड़ेगी तो हमें। और ये एक अच्छा एक्साइटिंग, बहुत सारी चीजें इस दौरान में पढ़ना पड़ी, और हमें अपनी नॉलेज को, ऐसे पैसा ही सब कुछ नहीं होता जो हमें हासिल होती है इस सारी एक्टिविटी के अंदर, थैंक्स बने, ठीक है। तो ये हम बढ़ाकर फिर जैसे ही हम इस पर क्लिक कर आपका जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर की है ना, तो और यहाँ पर लगा दें, ताकि ये काम ना करिए, डिलीट करने वाला था, जैसे कर देते हैं। ये सिर्फ 10 तक डिलीट जरूर होना चाहिए इसको। अच्छा, ये अभी मेरा वो हो रहा था, ठीक है। तो अब हम जब क्लिक करेंगे तो ये रुकेगा, और वो एक्टिविटी नहीं करेगा, और हमारा जो है ये नहीं तो ये सारा कुछ उड़ जाना था, ठीक है ना, हजारों तक ये सब कुछ उड़ जाएगा। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे। तो हमें तो ये इसको आपको अगली वीडियो के लिए जो है तैयार करना है, कि हमारा अगली वीडियो का एजेंडा ये है कि हम इस तरह की एक ब्यूटीफुल रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें ईयर रखेंगे, जितने भी हमारे ईयर हों वो खुद ब खुद ये यहाँ पे आ जाएं। 2 ईयर हैं, 3 ईयर हैं, 5 ईयर हैं, 6 ईयर, जितने भी वो आ जाएं, और किस ईयर के किस मंथ में कितने व्यूज हैं। यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन देंगे कि क्या लेना चाहिए, व्यू लेना है तो व्यू आ जाएंगे, ठीक है ना, और ये देना है तो ये आ जाएंगे। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन बना लेंगे, उसके अंदर व्यूज, वॉच टाइम, ये जिसकी बेस पर आप इसको येलो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिस चीज की भी बेसिस पे आप ये करना चाहेंगे, तो उसके अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि वॉच टाइम, तो ये वॉच टाइम के टोटल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इन 2023 शो करेगा, एज एंड कंपेयर इट विद द सेम ऑन द 2024। तो 2 ईयर के जनवरी के वॉच टाइम्स की टोटल यहाँ पे ले आएगा, कितना अच्छा, कितना यानी वो आपको, और फिर आपको पता चलेगा कि जनाब आपका सबसे ज्यादा वॉच टाइम जो है अब तक कितना हो चुका हुआ है, किस महीने में ज्यादा जा रहा है, क्या ट्रेंड है। आप एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो और ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमें अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। So this is the quiz related to the YT Studio. There are a number of questions too. The chapter is this. Okay. So in this, you have first question, and these are the multiple choices given for you, and which of them are to be selected. As soon as you select this anyone in this blank area, so it will judge whether your answer is correct or not, right? So uh, the quiz is based on the database, and in this database, you have all the chapters running like this. And if you see the YT Studio, for example, you search for Studio. Yeah. So these are the two questions which are entered in here, and uh, in which you enter the questions, the answers, their choices. So and as soon as you select when you enter into this sheet,
So the drop down is updated, and when you click on it, all the questions are selected in here. So these are the YT Studio based question, means the questions related to the YT Studio. Right, so two questions you have to answer. The first question is asking, YouTube Studio is a tool and application that allows creator to upload the edit videos. Yes, we do the uploading. So, and analyze the video performance. Yes, this is also true. And respond to the viewers' comments. Respond to the viewers' comments as well. Okay. So all of these is the most appropriate answer. So let's click on it. So you get 1 mark of 2. Okay. So you double click in here to proceed to the next question within this chapter. The next question is talking about the definition of the YouTube Studio, right? YouTube Studio is the creator's control room where they can manage and monitor the videos or perform. Okay, and the YouTube Studio is an application from YouTube.com. Yes, and YouTube Studio is a multiple application from YouTube. YouTube Studio is a portal for creators. What is the best description of the YouTube Studio, right? So if you want a cheat, you can go there here, and you will see that this is the question, this is the answer, and this is the answer. YouTube is the creator's control room where they can manage it. This is the best answer, right? So YouTube is the creator control room. That's it. So this is the answer, right? So you would ask that, what is the use of this? Well, this is a self-assessment. Yeah, you can cover this, you can hide this sheet, you can protect it so that nobody can gets enter without entering the password, right? So later on, then you can restrict the user easily to access the database, and so you can use it as a real testing application, right? Multiple choice. Let's click on here, and it gives you an answer. Right? So you have 2 out of 2, 100% correct reply. So that's good. Okay. So this was the MCQ presentation. You can use it by entering a new chapter in here, right? You can go to the bottom or insert a row anywhere and enter and just copy this formula down. So you will get a new place where you can enter the chapter. For example, you enter the chapter V32 and anything about the chapter. So that will proceed, that will continue until all the questions are covered related to the new chapter. And then you answer the questions and their answers, you enter their choices, and they become the part of your quiz. As soon as you click in here, you will find a new chapter in here. Okay, so this is how it's a simple application which shows you how you can use the VBA to create such sort of things in Excel. Okay, thank you very much for watching.